Dear friends, today I will discuss about steel chimney. Both analysis and design will be done. I will mostly today discuss about the types of chimney, what chimney is, types of chimney, is the design, the basic design, basic codal provisions that I will discuss today. Steel chimney are also known as steel stacks. Actually, the steel chimneys are made of steel plates bent into a shape of cylinders, and there's a limitation of this width of the plates. So usually it is 3, 4, 5, 6 feet of width, and usually we provide these chimneys of 100 meters or so, up to 300 feet or something like that. So what we do usually that कि one plate को हम bend कर देते हैं as a cylindrical shape, और टेलीस्कोपिकली एक दूसरे के ऊपर हम उस सिलेंडर को प्लेस करते हैं, और जब प्लेट्स को हम बेंड करते हैं तो बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली जहां पे जॉइंट्स आता है उसे हम रिवेटिंग करते हैं यूजुअली, और डिपेंड करता है कि सिंगल रिवेटिंग या डबल रिवेटिंग करनी है या ट्रिपल रिवेटिंग करनी है। वो डिपेंड करता है उसकी थिकनेस कितनी है, उसके डायमीटर्स कितनी है, हाइट कितनी है, विंड फोर्सेस कितनी आ रही है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं और उस पर भी डिसाइड बेसिकली होता है। तो इट इज So the things basically you can see this as a chimney, steel chimney, is a self-supporting steel chimney, and you can see that there are various cylindrical plates basically, which has been connected in sequence in a telescopic manner. Basically, one placed one above the other. It is made of cylindrical in shape. The lower portion of the steel chimney is widened or flared. What we do that this lower portion of the steel chimney is widened, whereas the upper portion is completely cylindrical. The very purpose of providing the flared portion of the self-supporting chimney is to give it more stability. The chimney is used to escape and disperse flue burned gases. जो flue burned gases है, जो coming from the furnace of the boiler to such an height that the gases do not contaminate or pollute the surrounding environment. जो भी फैक्ट्रीज है जहां पे हम काम करते हैं उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना कर सके ये जो बर्न्ड गैसेस है बेसिकली, it may be dangerous even because the cross-sectional area of the chimney depends on the type and quantity of fuel to be used in the plant. Availability of draft, how much draft to be maintained for carrying the burnt gases up the chimney. बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे चिमनी का डायमीटर है वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का जो बर्न फ्लू गैसेस है वो निकलना है, क्योंकि डिफरेंट बर्न फ्लू गैसेस है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे बॉयलर से आता है बेसिकली। तो किस टाइप का हमारा बर्न फ्लू गैस है, दूसरा कितना हाइट हमें मेंटेन करना है, तीसरा कि डिफरेंस ऑफ प्रेशर होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर भी होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है कि जो बर्न फ्लू गैसेस है वो लोअर पोर्शन से ऊपर जाए। जब टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर हाई होगा, तभी वो लोअर प्रेशर की तरफ जाएगा बेसिकली। तो ये चीजें हमें डिसाइड करती हैं कि व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ दिस चिमनी और किस हाइट तक हमें इसको ले जाना है बेसिकली। इसके सर्टेन कोडेड प्रोविजंस भी, देयर आर सर्टेन कोडेड प्रोविजंस रिगार्डिंग दैट। So this is one such self-supporting steel chimney.
The height of the steel chimney is kept to provide the required draft. Required draft is required difference of pressure. The draft is basically defined as the difference between the absolute gas pressure at any point in the duct or steel chimney and ambient atmospheric pressure. तो क्योंकि प्रेशर जो होता है चिमनी के अंदर ज्यादा होता है, एटमॉस्फेयर का कम होता है, तो ये हमें जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है इसको हमें मेंटेन करना है और इसी की वजह से जो बर्न गैसेज हैं वो ऊपर की तरफ जाती है. The draft depends on the height of the steel chimney above sea level, the type of fuel to be burnt, and type of furnaces and the temperature of burned gases. Now, before designing a steel chimney, it is necessary to decide the proper height and diameter of the chimney at the top. The environmentalist, basically, the metallurgist, basically, will tell us that this should be the diameter of this steel chimney. So it will decide by the environmentalist and metallurgist, basically. जो metallurgy और इसमें काम करते हैं, basically mechanical से related work करते हैं. Not metallurgy, but exactly just thermal वाले लोग हैं basically. वो हमें बताते हैं कि इसके diameter कितनी होनी चाहिए और height of the chimney कितनी होनी चाहिए. ये और then यहाँ से जो है वर्क शुरू होता है of the civil engineers basically. Two types of steel chimneys are there. One we call them as the self-supporting steel chimney, and the other is the guide steel chimney. The self-supporting chimney, you can see this here is the in the left you can see this a self-supporting chimney, and in the right you can see that there is a guide steel chimney. Self-supporting chimney के अंदर क्या है कि the upper portion is cylindrical, whereas the lower portion is flared. The height of the flared portion is usually one third of this total height of the chimney. इसके अंदर दो चीजें और प्रोवाइड होती हैं बेसिकली. एक दिस व्हाट वी कॉल द ब्रीच ओपनिंग से हमारा बर्न फ्लू गैसेस जाता है, एंड द अदर लोअर पोर्शन के अंदर जो इसके अंदर है वो क्लीन आउट डोर्स है, क्योंकि सॉल्ट्स होते हैं एंड सॉल्ट्स के अंदर कुछ बर्न गैसेस के अंदर फ्लू गैसेस के अंदर कुछ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं जो डिपॉजिट हो जाते हैं लोअर पोर्शन में. So usually for cleaning purposes, we use this clean out doors. तो guide steel chimney usually cylindrical होती है throughout, and उसके deflections को control करने के लिए, stability को control करने के लिए, we provide the guides at different heights. तो हम 2, 3, 4 हम guides usually provide करते हैं in the guided steel chimney. चिमनी को बेसिकली जो डिजाइन करते हैं, we usually design the chimney for wind forces, and these wind forces which act on this surface area, projected surface area of the chimney, is transmitted to the foundation by cantilever action. And if these wind forces are transmitted to the chimney by cantilever action, then we call them as the self-supporting. इस चिमनी को हम it remains stable under all working conditions without any additional support. सारे due to dead load, wind load और seismic load जो भी आ रहा है वो अपने weight की वजह से उसको स्टेबल करता है, अपने शेप की वजह से इसको स्टेबल करता है. We call them as the self-supporting steel chimney. Guided chimneys के अंदर हम steel guides provide करते हैं और जो भी wind forces या seismic forces आ रहा है वो guide basically उसको control करती है. तो डिफ्लेक्शन यूजुअली गाइडेड चिमनीज के अंदर कम होती है बनिस्बत के सेल्फ सपोर्टिंग स्टील चिमनीज के अंदर ज्यादा होती है. Certain codal provisions है. These codal provisions, the steel chimneys are designed as per the code IS code 6533 1989. इसके अंदर हम दो तरह के लोअर फ्लेट पोर्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, आइदर बेल माउथ फ्लेट पोर्शन और कोनिकल. बेल माउथ के कोई बहुत ज्यादा एडवांटेजेस नहीं है एंड इट इज बेटर टू इजीली कोनिकल बेस हम प्रोवाइड कर सकते हैं. तो यूजुअली most of the chimneys you will find self-supporting chimneys as with
conical base. The recommended height of the flared portion of the steel chimney is equal to 1/3 of the height of the steel chimney. Usually, या आपके ऊपर भी है, थोड़ा सा आप आगे पीछे कर सकते हैं as a design engineer. Yeah, it's up to you basically, but the recommended is usually 1/3. The bottom diameter of the steel chimney is nearly 25% more than the top diameter of the chimney. The other thing is that the height of the chimney is usually taken as 5 meters more than the tallest building within the radius of 150 meters. So if in the adjoining areas, if there is a height of the building is 100 meters, then usually we provide the chimney at least of 105 meters. तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि थिकनेस जो प्लेट है वो टॉप की तरफ कम होगा, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो विंड फोर्सेस बढ़ता जाएगा यूजुअली कैंटिलीवर के अंदर, तो थिकनेस भी स्टील चिमनी की बढ़ती जाती है बेसिकली। लेकिन कोड ये कहता है कि जो फ्लेयर्ड पोर्शन में जो थिकनेस है should be equal to the thickness in the जो bottom portion of the cylindrical portion है, जो वहां पे आ रही है thickness of the steel plate, सेम जो है एटलीस्ट मेंटेन करना है हमें फ्लेयर्ड पोर्शन के अंदर। For ease in construction, the upper diameter of plates forming the side of the chimney is kept less than the lower diameter. Each course fits telescopic over the lower course. एक्चुअली क्या है कि जो प्लेट हमारे पास यूजुअली आती है वो 3 फीट 4 फीट 5 फीट की आती है, और उसका हम सिलेंडर पोर्शन बनाते हैं, सिलेंडर बनाते हैं, उसके रिवेटिंग करते हैं, वर्टिकली रिवेटिंग करते हैं। लेकिन इस बनाने में हम क्या करते हैं कि जो ऊपर का डायमीटर है थोड़ा सा उसे कम रखते हैं, नीचे का थोड़ा ज्यादा रखते हैं, ताकि जो चिमनी है वो लोअर पोर्शन में इजिली फिट हो जाए थोड़ा सा। फिर उसके जो नेक्स्ट हम प्लेट्स का बनाते हैं उसमें भी लोअर पोर्शन को थोड़ा ज्यादा रखते हैं, ऊपर का पोर्शन थोड़ा कम रखते हैं, ताकि टेलीस्कोपी जो है वो तरीके से जो है एक दूसरे के ऊपर वो फिट होता चला जाए। और क्योंकि हम इसमें बट लैब ज्वाइंट करते हैं बेसिकली, अपर पोर्शन के अंदर लैब ज्वाइंट करते हैं, तो लैब ज्वाइंट में भी इसमें हमें आसानी होती है। The maximum deflection of the steel chimney shall be limited to 1/28 of the unsupported length. जो भी unsupported length आ रहा है हमारा रैंकिंस थ्योरी के हिसाब से, उसमें 120 200 of the unsupported length जो है हम उसको लेते हैं बेसिकली। Steel plates for chimney, the width of the steel plates commercially जो मार्केट में अवेलेबल है वो 0.9 मीटर से 2.5 मीटर अवेलेबल है। The most commonly width basically used for the chimney is 1.5 meter. Thickness of the plates for the chimney should not be less than 6 meter in any case, 6 mm. क्योंकि कॉरोजन का भी चांस रहता है, सॉल्ट की वजह से कॉरोजन भी होता है स्टील के अंदर। ये अपर 2 सेक्शंस ऑफ द स्टील चिमनी कोड ये कहता है कि 8 mm से कम जो है यूज नहीं करना चाहिए। मार्केट पे जो अवेलेबल है थिकनेस ऑफ दी प्लेट वो वैरी करती है, बहुत कम भी है, 1 mm 2 mm भी अवेलेबल है, जो हम यूजुअली शीटिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन फॉर चिमनीज 5 mm से अवेलेबल है, 5 से 63 mm तक थिकनेस ऑफ दी स्टील प्लेट अवेलेबल है मार्केट के अंदर। क्योंकि कॉरोजन से बचने के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं कि वी यूज दी ग्रेफाइट और कार्बन पेंटिंग, ताकि उसके अंदर ये इसके 2 पर्पस है कि हीट रेसिस्टेंट भी होता है थोड़ा पेंट, क्योंकि हीट रेसिस्टेंट पेंट होता है बेसिकली, तो स्टील को गर्म होने से भी रोकता है और कोरोजन से भी इसको रोकता है बेसिकली। यूजुअली हम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों में हम इसको पेंट करते हैं इसको। दो तरह के यूजुअली हम स्टील्स के अंदर जॉइंट्स यूज करते हैं, either lap joints or butt joints. In the upper portion of the chimney, in the cylindrical portion, mostly we usually do the lap joints, both in these vertical seams and horizontal seams. दोनों जगह हम यूज करते हैं बेसिकली लैप जॉइंट्स। लोअर पोर्शन के अंदर हम जो है वो यूज करते हैं बट जॉइंट्स, क्योंकि थिकनेस बढ़ जाती है
तो लैप जॉइंट सब यूज नहीं करते, हम बट जॉइंट यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली बट जॉइंट जब हम यूज करेंगे तो फिर हमें कवर प्लेट भी यूज करना पड़ेगा, उस पे फ्लैट्स यूज करनी पड़ेगी चारों तरफ, ताकि उसको हम बट कर सकें। कोड ने यूजुअली दिया है कि अगर थिकनेस ऑफ द प्लेट अगर हम डिफरेंट यूज करें, सपोज 6 mm यूज कर रहे हैं, तो हमें डायमीटर्स जो है वो रिविट्स के 16 mm सफिशिएंट है, सिंगल रिविटेड लैप जॉइंट विल बी सफिशिएंट। इफ इट इज 8 to 10, तो डायमीटर ऑफ रिविट्स जो होगा वो 18 होगा, डबल रिविटेड लैप जॉइंट्स होंगे। 12 to 16 है, तो डायमीटर ऑफ रिविट्स जो है वो 22 mm के लिए कोड कहता है, और मे बी ट्रिपल रिविटेड लैप जॉइंट यूज कर सकते हैं। मोर देन 16 mm है तब डायमीटर ऑफ द रिवेट्स जो है वो 25 mm है, और वो डिपेंड करता है कि डबल रिवेटेड है या ट्रिपल रिवेटेड आप यूज करना है। दूसरी चीज स्पेसिंग जो है along the spacing of the rivets along the cottage of the plate shall not be greater than 10 times the thickness of the plate. 10 t से ज्यादा हमारी स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, एंड 2.5 डायमीटर दी टाइम्स द डायमीटर ऑफ द रिवेट नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, 10 t से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हमें कोड कहता है बेसिकली। In the next lecture I will discuss about the lining of the chimney. इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर अभी भेजेंगे आपको। हमें आप अपना सजेशंस इस पे भेजें। इफ यू हैव एनी डाउट अप टू हियर देन आस्क द क्वेश्चन प्लीज।